like done really well for myself, and I never thought I'll be here. So it's amazing, and you should always chase your dreams, and it's never too late. Age is never a barrier, and this film is about that. And so for me, this is a subject that's very close to my heart. If I can say so, it's my favorite film yet. Hi Shahid, Himesh this side from Pink Villa. I have यार वो एक सेकंड लैंड तो करने दे, मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी. इट्स माय फेवरेट फिल्म येट. हाँ वो ठीक है, अब सुन मेरा अगला सवाल यार तू, है ना. और आ जाएगा. डोंट गेट इमोशनल एंड ऑल, डोंट मेक बिग स्टेटमेंट्स यार. मैं बहुत देर से सुरेंद्र, दिस इज ऑल योर फॉल्ट. आई डोंट तू इवन लोगों नो को रुकाएगा ना. वो माइक उनके पास कैसे पहुंच रहा है मेरे बट को तू वही इस साइड क्यों खड़ा है? तू थोड़ी देर उस साइड भी जाना. इस साइड खड़े होके तू उस साइड वाले पहले सांस ले. बैंड बजा रहे हैं. पहले सांस ले. देखा चला गया. गेट अ माइक एंड से दैट ब्रो. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? और यार माइक ना एक बार मेरे को बता दो किसको दे रहे हो. हाँ So I have खड़े हो जाओ. I have two questions. Shahid. अब वो मेरी बैंड बजाएगा, तू उसकी बैंड बजाएगा. वो तेरे से अपसेट होगा, नहीं, नहीं. उसका फ्रस्ट्रेशन. मैं पहले ही सवाल सुन लूं उससे. ओके. 2.5 स्टार देगा मेरे ट्रेलर को वो. तो बी नाइस टू देम. हे ब्रो, व्हाट्स योर क्वेश्चन? I have two questions, one for Shahid and one for Aman. प्लीज आस्क अमन फर्स्ट. Okay. अमन इज डाइंग टू टॉक. ही इज अ पंजाबी. कब से वेट कर रहा है. कल रात से उसने मुझे मैसेज कर दिया, तू स्टेज पे देख, मैंने सब बोल देना है. स्टेज पे आके चुप. आई एम ऑल्सो प्लेइंग कैरेक्टर लाइक दिस ओनली. So Aman, firstly, how would you how would you define your journey? You know, like you said, you were a marketing head at the time of Jab We Met, and now you are producing a film for Shahid. How do you view that? He was not a marketing head at the time of Jab We Met. He was in the marketing team. तब ये स्टार्ट किया था, बॉटम लाइन से स्टार्ट किया. He's made it all the way here today. So he started from the bottom. The journey's been great. Like Shahid said, I've known him for over 14, 15 years. Allu sir and we did Gajni, we did Jab We Met together. So everybody knows everybody familiarly. मतलब तूने एक भी फ्लॉप नहीं दिया. You're the only guy on this platform who's never given a flop. Suddenly इसने बोला Jab We Met, and then Gajni, and now we're doing Jersey. He's the most successful guy on this stage. You just didn't know about him yet. And we did Orta Punjab together. वो भी successful हो गई. वो भी साथ में किया. So worked various companies and now branched out individually. I'm thankful to Allu sir who gave me a call after watching Jersey and said, I still remember the day. It was a Tuesday. I was in the gym in the morning and he said, Aman, can you come to Hyderabad? I said, sir, but what happened? He said, एक picture आई है called Jersey and I want you to see it. I said, sir, ये बॉम्बे में लगी है, मैं यहाँ जाके देख लेता हूँ. He said, okay, but you need to see it now. I went to the cinema and What are you saying? ये पिक्चर एक बार बॉम्बे में रिलीज हो चुकी है? मुझे आज तक ये बात किसी ने बताई नहीं. The Telugu version. And then I went and saw it and called sir. And the journey started. I'm thankful for sir, but it's a journey. Everybody, like you're working, everybody keeps growing. So. And Shahid, my second question is to you. From Padmavat, Kabir Singh, now Jersey. The next is with Ali Abbas. बीच में बत्ती गुल भी आई थी. You can say it. I don't mind. Always be honest to yourself, bro. So my question to you is, you have gone very commercial with your choices. If you look at it, is that a conscious move? यार Kabir Singh was an adult film. Okay, first of all, Kabir Singh, when it Arjun Reddy, sorry, when it released in Andhra, the business was not very massive or something. You know, their films do 100 crore plus business. The business was very good for a newcomer film, right? I never choose films according to their commercial potential fundamentally. Of course, nobody wants to do a film that flops, but you want to tell a story really well. Now, if that story is more accessible, then it's obviously better because you can take that story wider. But I've also done stories that are less accessible in terms of, like, I mean, Urta is a film about drugs in Punjab, and Haider was a film which was about the problem of the common Kashmiri man, you know, so these are not things that everybody is going to be interested in. But you should always tell the stories that you really, really want to tell. I think Kabir went very wide in the Hindi, in the Hindi film fraternity. So we didn't really know how big it will connect. But I very strongly felt that I want to tell this story. I want to play this crazy character. I'm very excited to play this crazy character, you know. And so I did it. You know, beyond that, how do you know? I mean, I don't know. You know, I'm just doing things that really excite me. And of course, I'm very conscious and aware of the fact that I must try and do films which are more accessible. That's definitely something that I have learned to do more now, and very much after Kabir Singh, because there is a wide audience that has seen that film, and I want to give them a great story again, right? But I'm not trying to do the same kind of character again, trying to tell the same story again. That doesn't excite me. This old wine, new bottle, ये सब बोलते हैं लोग, मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है.
you know, मैं bottle बनाने नहीं आया, मेरे को wine में interest है. It should be something new as a character, it should be something new as a story. The reason I chose this film is because it is an extremely strong story with an extremely original, fresh character. And that to me is the right thing to do when you've played something as aggressive as Kabir Singh and as a film that is as loved as Kabir Singh. You cannot chase it. You must find something that is equally potent and put all your energy in that. I truly believe this film is very, very potent. And so I chose to do it. Okay, we have time for two more questions. Hi, Shahid. Wait. Hi, Shahid, towards your right. एक sec. Hi, Shahid. Can I ask? Where's the question coming from? Can you just put your hand up? Hi, Shahid. One sec. There's a question coming from here, Shahid, on the left. Hi, Shahid. Should I go? or- Yes, yes, go ahead. Yeah, hi Shahid. Hi, good evening everybody. Hi, this is Mayur from Beyond Bollywood. Mayur, where are you? I'm sorry, I can you can't. On your Hi. left side. Hi, Yeah. Mayur. Yeah. Yeah, Thanks. wonderful trailer and Gautam, I haven't seen the original, but I read about the film. The one word which struck with me about the film, it's that it's about a late bloomer. So my question is for Gautam, Runal, and Shahid. In the ever populated world where the emphasis is always on hiring youth, how difficult it is for a person in his mid 30s or 40s who's not been successful in the early part of his career, for them to be this late bloomer. So can each one of you, starting from Gautam, Mrunal, and then Shahid, could you give your perspective on this? Thank you. Sure. Thanks for that question. The true idea behind the story when I wrote the story 6 years back was we always draw inspiration from success of people. I mean, whether it's a successful person or a successful event, we always draw inspiration from them. And for me, the true inspiration should come from their effort, that spirit to be successful rather than the success. So that's how the idea of the story started. And these people who really try hard to be successful or really try to do something in their lives are all around us. I mean, it could be a father, it could be the person who drives you to work, it could be a sister, it could be a friend. So my basic idea is to tell the story of all these people who are around us and their success is not being celebrated. So this story is that celebration of human spirit to be successful rather than clapping for the successful people. So that's the basic idea behind the story. See, for me, my aim is not success. My aim is the journey. And this is what the film is about, the journey. Success, to aa hi jayega. Like, even when I started, I was not running behind success. I started because I wanted to experience. I wanted to witness what it feels like to be an actor, to share screen with, such wonderful actors like Pankaj sir and Shahid, and to be directed by Gautam sir, and have these wonderful producers having immense faith in me. And for me, this film, this story is deserved to be told, and each and every one sitting in this room will be able to relate. Whenever you watch this movie, you will relate that there are circumstances जहाँ पे उठाने पड़ते हैं हमें कदम. We can't really do anything. It's just, we are just reacting to the situation, So, yeah, so to sum it up, I would just say it's a journey. Success आएगा नहीं आएगा वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो. मैंने ना 20 साल जर्नी किया, अभी मेरे को सक्सेस चाहिए. इसने अभी 2-3 साल पहले स्टार्ट किया है. What's your question? No, tell me, no? About late bloomers? So I agree that is a part of this film, and that is to some degree, an angle that plays into this film. But we've seen films about late bloomers earlier also, and there have been a couple. I think Tufan was somewhere also similar. So this film is not just about a late bloomer. It might give you that impression because we are not revealing the story right now. We're just giving you a younger version and an older version, and you're just seeing moments of their, maybe current state of reality, as opposed to, one looks more glamorous and one looks more like down. But you have to travel the journey of this film to understand what it's actually about, and you actually, hopefully,
if you wait for the climax and if you sit till the climax, then you will understand what this film is about. It's, to me, it's much larger than all these things. What the film speaks about is I think, in spirit, what Gautam sir spoke about, which is it talks about the human spirit. See, success is what? What is success? I mean, if you win a medal, is that success? If you come first in school, is that success? But what about everybody else who worked equally hard? You know, why is that effort not celebrated? And I think that's something that doesn't happen in life, but in cinema that can happen. You can celebrate the emotion and the effort and the work that each one of us put in all those moments where we didn't get celebrated. Maybe it didn't go that well. Maybe, maybe we couldn't hold on to something and say, "Dekh, maine ye kamaya." But we are experiencing life. हम तो जिंदगी कमा रहे हैं ना. So ये फिल्म उस चीज़ के बारे में है कि आपने ज़िंदगी में क्या कमाया और आप ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हो और आपकी वजह क्या होनी चाहिए. So it's a very emotional film and it's a very inspiring film. Some films make you cry because you feel sad. This film made me cry in a very, I don't know, I felt uplifted. I was crying in an overwhelmed manner, and that is why I wanted to bring this film to the audience, because I think everybody needs a little bit of faith, everybody needs a little bit of positivity, everybody needs to believe in themselves. And you must believe in yourself. Let the world say what they want to say. You must believe in yourself because only you live your life, And this film is about that, So late bloomer and all, yes, but I think it's a little above that, That's just a setup for the character. But what we're trying to say in the film, I think, is very universal. Hi, Shahid. If I can add to that, we often forget that why we started. So every time you have to remind yourself, this is exactly why I started. So just remember why you began. Hi, Shahid. One sec. Towards your right. One sec. Yeah. Who? I'm deciding. One sec. There's a question coming in for you. Hi Shahid, yeah, सामने आपके सोहेल यहाँ आपके सामने है. I'm getting over his statement. Kabir Singh is in the room. I'm deciding. The trailer is fantastic. Congratulations to आप सभी लोगों को. बात करते हैं जर्सी की और फिल्म में बताया कि बच्चा जर्सी के लिए ना. When the shot is ready, let me know and get. So yeah, these bikes look very nice, but they're in really bad condition because they're very old. But I remember that my mamu used to own a Yezdi. In fact, that was one of the discussions that we had, and it was a memory that I shared with Gautam sir, and I was like, that should we use a bike like that, because it's a very strong memory that I had. And of course, we need to find a vehicle that's right for the period, because one part of the film is in the 90s and one part of the film is in the 80s, right? So the older part is in the 90s, and it's one of the most iconic motorcycles of the 90s. And I remember sitting with my mamu and riding on it a lot. I used to be a very fascinating big motorcycle when I was a kid. So, Shahid. इसके गियर मैं मंगा देता हूँ आपके लिए. इधर से आप उसी पे निकलो. चलाते हो आप बाइक? हाँ, क्या था इसका 1 down 3 up, ऐसे 1 up 3 down ऐसे कुछ होता है. बस कभी आपका किकबैक मिला है आपको बाइक पे? कभी किया है? Solid. अभी तो ऐसा स्विच पे हो गया सब. All right, here's the order. 1, and then 2, and then this gentleman in the third. So you can start with your question. Hi, Shahid. Here, towards your right. Upar. Yeah. Right at the top, behind the lights, Shahid. Hi, Shahid. Yes. हाल ही में स्पोर्ट्स ड्रामा. अरे कैसे आप? बहुत टाइम बाद. या आप कैसे? मैं ठीक हूँ सर. Shahid. Sorry, I'm getting excited. I've not seen you guys for very long. Apologies. That's your cue to say likewise, but it's okay. We'll move on quickly. All right. शाहिद, अभी कुछ सालों में बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा की बात करें तो बहुत सारी स्पोर्ट्स फिल्में बन रही हैं. क्रिकेट पे भी काफ़ी बनी हैं. आप इसमें क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे हैं. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पर्दे पर और कौन से स्पोर्ट्स ड्रामा में आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे? कोई ऐसा रियल लाइफ किरदार या स्पोर्ट्स पर्सन जिसे आप पर्दे पर पेश करना चाहेंगे? कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार, आई एक्चुअली रियलाइज कि जब भी आप कोई भी फिल्म करो जिसमें एक स्पोर्ट हो या कोई भी एक स्किल हो जो आप विच यू आर नॉट स्किल्ड इनफ इन,
उसको करना बहुत मुश्किल होता है. तो आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट अप्रोचिंग a subject which requires that amount of skill unless I can dedicate that amount of time to it. When I did this film, I realized that even though it's something I've played always and I was a cricketer, to try and do it at the level at which it needs to be done for the film to look authentic and for it to look right for this character. शायद हिंदी में थोड़ा पहले बता देते भाई. हाँ, मेरा फ्लो टूट गया. आई एग्री, आप सही कह रहे हैं. नहीं, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हो जिसके अंदर कोई एक स्पोर्ट होती है या कोई भी एक स्पेशलाइजेशन होता है जो आपको सीखना पड़ता है. अगर आप उसको ऑथेंटिकली नहीं कर पाते तो कहानी आप कितनी भी अच्छी कहो, इमोशंस आप कितने भी अच्छे से पोर्ट्रे उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है. तो मैं बहुत सोच समझ के करूँगा. अगर मैं फिर से कोई भी स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म करूँगा तो मुझे उसके लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ेगा और वो देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ क्रिकेट से एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स. फिर भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. सो आई वुड रियली थिंक मैनी टाइम्स बिफोर टेकिंग इट अप. शायद एक छोटा सा सवाल और है. शायद आपने बताया कि 4 महीने आपने प्रेप किया था, 4 महीने ट्रेनिंग ली थी. कितना मुश्किल था फिर से बैट बॉल उठाना? और इसी से जुड़ा एक छोटा सा और सवाल है कि इसका आंसर दीजिए, मैं फिर पूछता हूँ. आप जवाब दो उनको, है ना. कितने सवाल पूछ रहा है. शी इज सिटिंग आउट देयर एंड सिंग. सो क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल है. उसकी टेक्निकलिटी होती है और जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर लगना चाहते हैं तो आपको वी हैव अ ट्रेनर हु वी हैड हायर्ड फिल्म के लिए. उनका नाम है राजीव और उसके साथ एक पूरी टीम थी उनकी. उनके असिस्टेंट थे हर्षुल और फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो सब थे. सो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. आपको उसको बहुत अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है. आप कैजुअली अप्रोच नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकली करना पड़ता है. एक इंजरी भी आपको हुई थी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? So we have, yeah, go ahead. No, go ahead. तुम ही लोग डिसाइड कर लो यार. No, so I believe Allu Arvind sir has to leave at 6:15. So we'll take, wait, there's a senior journalist who's waiting for a question to be asked, sir. Please go ahead with your question. Shahid, hi, Ramchandran here. Hi. Yeah. Yeah, Shahid. So you obviously honed your cricket skills during the film. How much of a craft have you honed after a film like this? You seems to be a very, very intense performance from what the trailer looks like. I've seen the Telugu version as well. How much have you honed your craft after this film? See, the best way to हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में, आप क्या प्रेफर करेंगे? फ्रेंच मुझे आती नहीं है. इंग्लिश इज ओके फॉर यू? जिस भाषा में आप बोलना चाहते हैं. सो देखिए, अगर आप अपनी स्किल्स को होन करना चाहते हो तो मैं तो पंजाब में 2 साल रियासी तो एनीवेज. सो आपको अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए. आप अपने स्किल्स होन नहीं कर सकते. आपको जाके काम करना है. आप खुद ही गाड़ी चला रहे हो, नेविगेट भी खुद कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है. जब आप कार रेसिंग देखते हो, एक नेविगेशन वाला होता है और एक गाड़ी चला रहा होता है. तो यू नीड समबडी हु विल गाइड यू. यू नीड समबडी जो आपको बाहर का पर्सपेक्टिव दे, जो आपको कुछ नया बताए, आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर कुछ नया फ्यूल डाले जिसकी वजह से आप उसको कुछ अलग तरीके से अप्रोच करो. कहानी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए सबसे पहले. ना कोई डायरेक्टर कुछ कर सकता है, ना कोई एक्टर कुछ कर सकता है. अगर कहानी के अंदर दम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. वो गाड़ी क्रैश होने वाली है, आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हो. कहानी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, कैरेक्टर के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, और जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपके को एक्टर्स हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, दे शुड ऐड टू योर जर्नी. सो कोशिश यही है कि मैं उस तरह की फिल्में चुनूँ. Okay, wait. Okay, go ahead. पूछिए. Gajani 2.
Actually, it doesn't come out like that. There are many Hindi films being made in Telugu and Tamil also, but it's not publicized well here. It is publicized there, and yeah, the recent Pink is the one which is a blockbuster there, produced by Mr. Dil Raju. So there are many films like that, but it doesn't come into the press here. There's the reason because of the localization. Thank you. Right, there's a lady. Yes, ma'am. Last. I had quite a few flops in the first 15 years of my career, you know. So you have to develop a hard skin, and no. So Arjun is. It's interesting to hear that you think that Arjun is a motivated character, because that's a very subliminal layer in the character. It's not really at the forefront. At the forefront, the character is very laid back, and for most people, when they see the film, and that was our conversation also, it would seem that he doesn't seem to be very motivated for sure in a large part of the film. But there is an internal angst, an internal belief, an internal need to prove that is there in him throughout. And to me, that is the most important layer of that character, because I don't want to see a story about a guy who doesn't want to do anything. I want to see a story about a guy who really wants to do something but for some reason isn't doing anything. That story interests me, and that's the way I saw this character. Yeah. Ma'am, sorry. There's one last question because we are pressed for time. This coming from this gentleman here. Why don't you get a mic, man? Why don't you give me a mic? Okay, thank you so much, यार. Thank you. Okay, शाहिद and Mrinal and team, सबसे पहले तो congratulations. आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम फैजान है. Hi Faizan, how are you? Nice to meet you, Faizan. Lovely, yeah. कोई नहीं. Okay, शाहिद and Mrinal, सबसे पहले तो congratulations ट्रेलर के लिए and team. बहुत अच्छा ट्रेलर है, मेहनत दिखकर आ रही है आप लोगों के सामने, नजर आ रही है इसमें. अगर इस किरदार की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कितनी इमोशनल जर्नी थी आपकी इस फिल्म के अंदर? आप दोनों से मेरा सवाल है. थैंक यू. विद्या की ये जो जर्नी है, बहुत टफ चॉइसेस लिए है उसने फिल्म में, और मेरे लिए भी विद्या प्ले करना कुछ मतलब आसान नहीं था. इनफैक्ट बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन तीसरे चौथे दिन अमन को मैं कह रही थी कि अमन मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है. लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया. ही मेड श्योर. एक ऐसा दिन था जहाँ पे इनफैक्ट ये सीन जहाँ पे मुझे उनको थप्पड़ भी मारना था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं उस सीन, क्योंकि शूटिंग के चौथे या पांचवें दिन वो सीन शूट हो रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं शायद उस सीन के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ. और बहुत ही कम, इनफैक्ट नहीं, मैंने कभी देखे नहीं ऐसे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने वो शूटिंग कैंसिल करके मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए, और उसके बाद वो चाहते थे कि मैं कैरेक्टर का जो जर्नी है वो महसूस करूँ, और देन आई शुड डिलीवर द परफॉर्मेंस. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. डिड यू? तो या बहुत डिफरेंट रोल है विद्या का. आपने मुझे कभी ऐसे रोल को प्ले करते हुए नहीं देखा होगा. हमेशा हंसती रहती है, खेलती रहती है, स्वीट सी लड़की होती है, हमेशा सपोर्ट करती है. बट काफ़ी सब कंप्लेंट्स आ रही थी मुझे लास्ट टाइम कि आप हमेशा सपोर्टिंग रोल में ही क्यों आते हो, आप हमेशा सपोर्ट ही क्यों करते हो. अभी लो जैसे इट इज. शायद आपसे जानना चाहूँगा, क्या अप्रोच होती है कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए? सॉरी, क्या होती है? क्या अप्रोच होती है आपकी कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए? काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार आपने निभाए हुए हैं इससे पहले, चाहे वो कबीर सिंह हो, चाहे वो जब भी मैट में हो, या उड़ता पंजाब में हो. इस बार आप अर्जुन का कैरेक्टर निभा रहे हैं. तो कोई भी कैरेक्टर पकड़ने से पहले क्या अप्रोच होती है, क्या प्रिपरेशन और क्या तैयारी, फॉर्मेट क्या होता है आपका किरदार? जो भी कैरेक्टर्स का नाम आपने लिया है, मैं अब तक उनको पूरी तरह पकड़ नहीं पाया हूँ. कोशिश यही होती है कि आप कुछ हद तक उनको समझ पाओ या उनको पकड़ पाओ. बट थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर थिंकिंग दैट माई वर्क इज़ वर्थवाइल. You should always approach every film like it's your first.
You should never get into a film thinking मैंने पहले ये किया है, मैं आज इतने साल काम कर चुका हूँ, मेरी इतनी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, लोगों को मुझसे ये देखना है, मैं सेट पे जाके ना ऐसे कर दूंगा तो डायरेक्टर ताली बजा देगा. ये सब बकवास है. आप वही एक्टर हो, एक फिल्म में आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हो, अगली फिल्म में आप बहुत बेकार काम कर सकते हो. मैं खुद एक ऑडियंस हूँ और मैं कभी कभी बहुत ही अच्छे एक्टर्स को देखते देखते सोचता हूँ व्हाट वाज दिस पर्सन थिंकिंग व्हेन ही वाज डूइंग दिस रोल. यू नो, यू हैव टू स्टे अवेक एंड यू हैव टू स्टे रेलेवेंट. दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. कई बार मैं अपने से बहुत ज़्यादा यंगर जूनियर लोगों का काम देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू अप्रोच इट. एवरी फिल्म इज़ अ न्यू जर्नी. Every time it's going to be something new. जो हो गया वो हो गया. Nobody cares about that. उसका पैसा उन्होंने दे दिया. Audience वापस आ रही है. You have to give them something substantial. And that's what I hope I can do with Jersey. All right. I hope our cast and crew has answered all the possible questions that there were to be asked. And अब हमारे सारे जो photographer friends हैं, आवाज निकली. So we'll take the microphones. You can keep it. So thank you.